Let's consider a long solenoid of length L, area of cross section A, total number of turns N, number of turns per unit length N, and let current I is flowing through this solenoid. Let phi is the magnetic flux linked with each turn of this solenoid, and then the total magnetic flux linked with the solenoid will become n phi. This is equal to L into I. ये हमने प्रूव किया था. यहाँ से फाइंड आउट कर लें L इज इक्वल टू n phi डिवाइडेड बाय I. A number of turns per unit length n can be written as capital N divided by L. तो यहाँ से n can be written equal to n into L. Phi equal to हमें पता है b vector dot area vector. b vector is parallel to the axis of the solenoid. area vector भी उसी डायरेक्शन में है. So this will become b into a. Phi is equal to b into a divided by I. B can be written equal to mu naught into n into I. N into L into mu naught n into I into A divided by I. I कैंसिल हो जाएगा और L ये आ जाएगा. यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम इग्नोर कर रहे हैं एज इफेक्ट्स को बाय कंसिडरिंग ए लॉन्ग सोलिनॉइड. एजेस पर जो बी की वैल्यू है वो इसका अप्रॉक्सीमेटली हाफ होती है. तो यहाँ से हमारे पास एल आ जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए. Now, if we fill the inside of the solenoid with a material of relative magnetic permeability mu r, for example soft iron के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो L will become mu r times this. So this is the expression for self inductance of a long solenoid. यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि L depends on number 1 mu r, that is relative magnetic permeability of the core of the solenoid on which the winding is done. Secondly, it depends upon the geometry of the solenoid. Geometry में क्या क्या आ जाएगा? N number of turns per unit length, L length of the solenoid, and A area of cross section of the solenoid.